हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। आज का मेरा वीडियो है अबाउट 9 थिंग्स आई स्टॉप्ड बाइंग इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी इन द ईयर 2024। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 आइटम इज़ आइटम्स ऑन सेल। ओके, सो डिफरेंस होता है अगर कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, एंड कोई चीज़ आप ले रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सेल में है। ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है। सो जो कंपनीज सेल लगाते हैं यूजुअली ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इन ऑर्डर टू मेक मोर रेवेन्यू। इससे वो चीज़ें जल्दी बेचते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। सो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, स्पेशली जो इम्पल्सिव बाइंग जो हम में होती है। जैसे हम कोई दुकान में जा रहे हैं और हमें दिखता है 40% ऑफ या 50% ऑफ, तो हमें बहुत टेम्पटिंग लगता है, तो हम सोचते भी नहीं है कि वो हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। हम डायरेक्टली जाके वो ख़रीद लेते हैं जस्ट बिकॉज वो सेल में है। सो आपको ये चीज़ डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए कि 24 to 48 आवर्स रूल। सो स्टार्ट विथ 24 आवर्स। ठीक है, एक दिन दीजिए उसको। अगर आप 24 आवर्स के बाद में भी आपको लग रहा है कि इसको आप वो चीज़ की आपको ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप जाइए और वो चीज़ ख़रीदिए। बट आई पर्सनली फॉलो 48 आवर्स। ठीक है, तो 48 आवर्स खुद को मैं देती हूँ, एंड आई थिंक वेदर दैट्स समथिंग दैट आई जेन्यूनली नीड, मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। लेकिन अगर यूजली $100 से कोई भी ज़्यादा की चीज़ है तो उसमें आपने डेफिनेटली जाके वो चीज़ ख़रीद नहीं लेनी चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑन सेल। ओके, सो दैट्स द नंबर 1 आइटम। ऑलराइट, द सेकंड आइटम इज़ उबर ईट्स। सो यूजली क्या होता है, लेज़ीनेस की वजह से आजकल टेक्नोलॉजी जो हर चीज़ हमें हमारे डोर स्टेप पे अवेलेबल है, इट्स बिकॉज कंपनीज आर अर्निंग मोर। ठीक है, तो उनको ये पता है कि एक क्लिक अवे है आप, जस्ट उनको अगर आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है खाने के लिए। सो सबसे पहले तो आई ट्राई कि एक डिसिप्लिन हम फॉलो करें इन ऑर्डर टू वी कुक एट होम। क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, सो यहाँ पे वी ट्राई टू कुक एट होम ड्यूरिंग द वीकडेज। और हमने यूजली वंस और ट्वाइस, बिकॉज माई पेरेंट्स आर हियर, सो आई टेक देम आउट। और वो भी एक सैलरी पैकेजिंग कार्ड, मेरे पास एंटरटेनमेंट मील्स बेनिफिट कार्ड है जिसका मैं यूटिलाइजेशन करके वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक डाइन आउट करती हूँ। बट दैट्स प्लान, बट रेस्ट ऑफ द डे वी कुक एट होम। ठीक है, लेकिन आई अवॉइड उबर ईट्स एज मच एज आई कैन, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा आपका मनी स्पेंड होता है और आप ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, और आपको ये लगता है एक ही बार है, दो ही बार है, लेकिन जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करते हैं तो आपका एक चंक ऑफ मनी उसमें वेस्ट होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव इट अ थॉट। सो सेकेंड आइटम इज़ उबर ईट्स। ओके, नंबर थर्ड आइटम which I stopped buying to make more money in 2024 is ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। सो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में और आप टिकटॉक में या इंस्टाग्राम में आप इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ ट्रेंड कर रही है, ट्रेंडिंग। सो लड़कियों में स्पेशली होता है कि अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो ट्रेंड कर रही है, सो यू वांट दैट आइटम बिकॉज योर फ्रेंड हैज़ इट, क्योंकि उसने देखा है ये इट्स ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको ये देखनी चाहिए कि आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी है वो इनफ है। अगर जस्ट बिकॉज आप ये खरीद रहे हैं बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग, सो डेफिनेटली वो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। ओके, एंड दैट्स समथिंग प्रॉबेबली यू नीड टू स्टॉप डूइंग इज वेल, बिकॉज आई डोंट डू इट पर्सनली। सो या, सो दैट्स द थर्ड आइटम, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। Number fourth item is the updated version. Okay, so I bought this watch. I think it's been 3 to 4 years back, probably more than that. But I haven't bought another watch after this, just because जब मैंने पहली बार ये घड़ी खरीदी थी तो मुझे बहुत खुशी मिली। आई वॉज रियली हैप्पी कि मेरे पास एप्पल वॉच है एंड इट वॉज़ वेरी इफेक्टिव टाइम के लिए, और अदरवाइज इफ़ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, इट्स ग्रेट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सो आई नीडेड इट। बट जस्ट बिकॉज उसके इमीडिएटली एक साल बाद या 6 महीने बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया है, सो आई एम नॉट समवन जिसको कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें खरीदने की अर्ज होती है जस्ट बिकॉज उसमें कुछ probably 5% improvement हुई है। So I don't think that I need to spend on something just because it is an updated version of something. So I avoid buying things or the updated version of whether it's an iPhone or it's an Apple Watch. I avoid doing that. Okay, the next up we have, which is like fifth item on the list, is luxury beauty products or overpriced branded products. Okay, so
पहले मुझे इन माई 20s आई डेंट नो, व्हेन यू इन कॉलेज यूजली पीपल टॉक अबाउट कि ये ब्रांड चल रहा है, या ये ब्रांड बहुत किसी ने लुई विटॉन की बैग खरीदी आपकी फ्रेंड ने, और आपको वो टेम्पटेशन होती थी वो ब्रांड. सो यूजली क्या होता है कि आप कपड़े खरीद रहे हो या शूज़ खरीद रहे हो या बैग खरीद रहे हो, और उसमें एक ब्रांड का लिखा हुआ है. सो बेसिकली दैट्स समथिंग जो लोग जिनको नहीं पता है वो एज अ स्टेटस को और सिंबल, स्टेटस का सिंबल शो ऑफ करने के लिए यूजली लेते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट जिसको ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का शौक है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. आई एम जस्ट सेइंग आई पर्सनली अंडरस्टूड कि यूजली क्या होता है, जैसे यूट्यूब में फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम वेयरिंग समथिंग, सो दैट ब्रांड उनके लिए तो वो स्पॉन्सर, वो दे आर नॉट पेइंग मी फॉर दैट, राइट, अनलेस इट्स लाइक अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दे आर नॉट पेइंग मी फॉर दैट, बट स्टिल हम वो खरीदते हैं, हम वो पैसा डाल रहे होते हैं उनका प्रोडक्ट, because they want us, they want people, more and people to buy from them without even paying them, but we are paying money, we are investing that money to buy that product, and the company is making huge money from it, huge revenue from it. So just because I want to show off something or status quo के लिए दिखाने के लिए I wouldn't buy, I have stopped buying clothes or the branded products. So but it's a personal choice, I would say, but I have personally stopped doing it. Okay, the next item is books, number 6 item. So what I do about books, I'm going to tell you, is I usually I read like reviews, and I read whether it's like a really good book, उसकी summary मैं पढ़ती हूँ. और अगर मुझे लगता है कि डेफिनेटली रिसर्च करने के बाद मुझे लगता है ये बुक मुझे खरीदनी चाहिए और मेरे पर्सनल कलेक्शन में होनी चाहिए, देन डेफिनेटली आई गो फॉर इट. The second option that I'm doing these days, I've found a shop nearby. So that guy, there's a bookshop. So he keeps the second hand books. Okay, so उसके पास second hand books होती है जो कि $8 में मिलती है. $8 is the fixed price for that. And I usually go there and pick up the books that I need, जो मुझे चाहिए मैं वहाँ से ले लेती हूँ. अगर मुझे वो बुक मेरे कलेक्शन में नहीं रखनी है, so I can trade him, I can give that book back to him, but that's usually I buy with much lesser price, so $8 in comparison to $30-40. That's something I'm doing. So second hand books, of course, like latest edition, उसमें कई बार होता है कई बार नहीं होता है, but जो essence है वो वही होता है books का. So that's something I'm doing these days, but mostly what I would do is I would read the summary. If that's a really good book, after doing my research, I would choose to spend on it. Otherwise, this is the second-hand bookshop that I have. I would buy from there, or sometimes you can check out the workshops and seminars. Usually, people have like where you get, books in discounts. That's a great way. आपको अगर hard copy पढ़नी है, लेकिन अगर आपको Kindle से या कोई audio book का शौक है, so बहुत सारे online platform available है. You can read that. You can use that as well. I am old school as far as reading is concerned, so I like to have hard copy, but then I do my own research before investing on buying books. Okay, so that's my number 6th item. Number 7th is a car. Yes, you've heard it right, it's a car. So I bought car long time back. Right now I'm sharing the car with my husband, so I can buy if I want to another car, but I will not do it because I think we're choosing to share the car. क्योंकि उसमें क्या होता है, कार जब आप खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे हिडन कॉस्ट भी होते हैं, जैसे मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, योर रजिस्ट्रेशन. सो उसका जो ऑन रोड कॉस्ट है वो डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू जस्ट इन एडिशन टू बाइंग द कार. अगर आप इंटरेस्ट में ले रहे हैं, सो दैट्स अनदर थिंग. सो आई एम पर्सनली चूजिंग, और मेरा वर्क प्लेस भी बहुत पास में है, सो आई वॉक बिकॉज दैट्स अ ग्रेट वे. आई एम अ फिजियो, सो दैट्स अ ग्रेट वे फॉर फिटनेस इज वेल. वॉकिंग इज अमेजिंग. It's not far, so and sometimes when I need the car and when he's at home, I take the car with me. Like मुझे कभी patients attend करने at home, then I use the car. But personally, I wouldn't buy the car straight away because I feel like there's so many different costs, hidden costs associated with buying a car. So probably, and you know that कि a car depreciate होती है time के साथ साथ. वो depreciating asset, it's not basically asset, it's liability, but it depreciates with time. So I will buy a car in future when I need it, and when I have enough money coming from my assets, then probably I'll buy it at a different point of time when
absolutely needed, but that's something I am not buying at the moment. Okay, so that's my number 7th item. Number 8 is high maintenance treatment. So I personally do like the basics in order to maintain hygiene. Of course, I do what is needed, but I haven't done my like nails for a long time, those fake nails or fake lashes. These are the things I avoid as much as I can. मुझे इसकी खुद से ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस अगर आपको पैम्परिंग के लिए आप कर रहे होते हैं. बट आई डोंट थिंक आई नीड समथिंग दैट्स like really high maintenance because I'm not used to doing it. Personally, I choose not to invest in that. Instead, I would use that money probably to buy a book or to learn a course. I would love to invest in myself or join a course and learn something new, like a new skill, instead of just going and doing your nails or like a massage session. I wouldn't do it personally. Okay, so though that's my number 8 item, which is high maintenance treatment, which I'm not doing in order to make money in 2024. Okay, number 9th and last item on the list is in-app purchases or utilizing subscription. So whether it's in-app purchase, sometimes we have things on phone हम खरीद लेते हैं and we don't even use it, whether it's games or some random app. So avoid doing that because I'm reading a great book called Atomic Habits. I'll do the review for that book in my upcoming video, but in that it's mentioned that visualization is a great thing in order to building a habit as well. So if something is distracting you, if some app is there which you're not utilizing, then you don't need to pay for it. So that's one thing. The other thing is like the subscriptions which you are not using. ऐसे बहुत सारे हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जो हम साल भर यूज़ तो कर नहीं रहे होते. सो जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल DSR डेटा की ज़रूरत है, सो आई वुड रादर पे फॉर अ मंथ इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट for an annual plan. So अगर मुझे जब उसकी ज़रूरत है मैं वो खरीद लूँगी, instead of just buying it and paying for it and not utilizing it, because that then goes for waste. Okay, so that's my number 9th item. So this was a list of 9 things I stopped buying to make more money in 2024. I hope you like this video. I hope आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.